नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो केंद्रीय बजट पेश किया उसकी कई विशेषताएं रहीं, जिसके चलते आज शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। कई वस्तुओं पर टैक्स कम हुए तो वहीं कई इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम बढ़े, जैसे कि मोबाइल के साथ कई विद्युत उपकरणों के दाम बढ़े, चार्जर के भी दाम बढ़ गए। इस बार स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार कुछ मेहरबान दिखी। इसी तरह शिक्षा का बजट में सरकार ने प्रयास किए हैं। आम आदमी पर बजट के कारण बोझ न पड़े, सरकार का प्रयास यही लगता है। इसका वहन सरकार खुद करेगी जिसका सरकारी संपत्ति पर कब्जा है। सावधान हो जाएं, सरकारी संपत्तियों को बाजार भाव पर बेचने का ऐलान भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है। रेलवे की संपत्ति जिस पर बहुत से अवैध कब्जे हैं उन सभी को बेचा जाएगा। इसी तरह कई सरकारी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर बेचकर धन जुटाया जाएगा। कानपुर नगर में भी अरबों की संपत्तियों पर अवैध निर्माण हुए हैं। अब लोगों के माथे पर बल पड़ गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अवैध कब्जेदारों से केंद्र सरकार किस तरह निपटती है। सरकारी नौकरी करने वालों को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। वहीं 75 साल के बुजुर्गों को अब ITR नहीं भरना होगा। ये उनके लिए राहत भरी खबर है। किसानों के लिए भी सरकार ने उनकी आय 2 साल में दुगनी करने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ठोस आश्वासन सरकार नहीं दे पाई। दुर्भाग्य ये है कि जिस कोरोना महामारी ने इतने लोगों का रोजगार छीना, उन जरूरतमंद कामगारों के लिए कुछ भी नहीं किया। यदि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की दिशा में कोई कदम सरकार उठाती तो निश्चित रूप से सराहनीय काम होता। As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this. And I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others.
Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. ऑस्कर वैलेंटाइन की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हां, बेल आइकन जरूर दबाएं।